Hello students, this is class 4, subject is English and myself Nisha Singh going to teach you English. And let's start the class. This is your textbook Marigold which we are going to study in this year. Okay, now unit first. See the unit 1 and each unit having the two sets of lesson. And in unit 1 there are the two lessons, wake up and Neha's alarm. Today we are going to read the poem wake up. Okay, so let's begin. The word wake up means get up. Okay, word wake up means क्या होता है? Get up. Wake up, it's a lovely day. Oh please get up, come and play. Birds are singing in the tree. You can hear the buzzing bee. Here the poet says to the children, it is a lovely day, so you all get up, please get up and come and play. See, birds are also start singing in the tree. Even you can hear the buzzing sound of the bees. हाँ, पोएट बच्चों से कह रहे हैं कि उठो, ये कितना प्यारा दिन है, इसलिए उठ जाओ, बाहर आओ, खेलो. चिड़ियों ने भी पेड़ पे गाना शुरू कर दिया है, पेड़ों पर गाना शुरू कर दिया है. साथ ही में आपको तुम सब बीज मधुमक्खियों की भिनभिनाहट भी सुन सकते हो. सी द स्पेलिंग ऑफ बजिंग, BUZZING, एंड बजिंग मीन्स humming sound of see the spelling of humming sound of bees. मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को हम क्या बोलते हैं? buzzing बोलते हैं. Okay, and you can hear the buzzing sound of bees. Now next, wake up, it's a lovely day. Oh please get up and come and play. It's much too late to lie in the bed, so hurry up, you sleepy head. Once again here poet says to the children, wake up, see it is very lovely day, so you all please get up and come and play. It is too much late to lie in the bed, you all hurry up to get up, you sleepy head. सी पोएट ने कहा है कि बच्चों से कहा कि आप सभी बच्चे उठो, देखो यह प्यारा दिन है, तो आओ बाहर और खेलो. ये बहुत वैसे भी पहले ही देर हो चुकी है, बेड पर अब सोना छोड़ो, बहुत देर हो चुका. सो हरी अप, इसीलिए जल्दी उठो. यू स्लीपी हेड यहाँ पे पोएट ने किसके लिए यूज़ किया है? फॉर द स्लीपी चिल्ड्रेन, जो सुबह जिन्हें सोना बहुत पसंद है. For them, the poet used sleepy head. Now next, wash and dress and come on out. Every is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. Here the poet once again says to the children to get up and wash your face and dress well and come out and see everyone and every creature is about. Get up. Who all are the creatures? The creature like cow, the horses, the ducks and the sheep. Even the tiniest chicken also get up and giving the sound of cheep cheep cheep. So you all get up. यहाँ पे फिर से पोएट ने बच्चों से कहा कि उठो, अपने फेस वॉश करो, वेल ड्रेस्ड हो जाओ और बाहर आओ. देखो सभी क्रिएचर्स जग चुके हैं. कौन कौन जग चुके हैं? कौन वेकअप हो चुके हैं? काउस, हॉर्सेस, द डक्स, द शीप्स. हाँ, यहाँ तक कि द टाइनिएस्ट. सी द स्पेलिंग ऑफ टाइनिएस्ट, TINIEST. टाइनिएस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट. ओके, टाइनिएस्ट मीन्स क्या है? स्मॉलेस्ट. यहाँ तक कि छोटा सा जो चूजा है, चिकन है, वो भी जग चुका है, जो कैसा साउंड कर रहा है? चीप चीप चीप. ओके, सो यू ऑल गेट अप. सी चिल्ड्रेन, दिस पोएम इज रिटन बाय स्ली फ्लेचर्स. ये पोएम किसने लिखा है? स्ली फ्लेचर द्वारा लिखा गया है. सो यू ऑल रिमेंबर द नेम ऑफ पोएट ऑल्सो. ओके, नाउ कम टू द
Word meaning of this poem. First word is lovely. Lovely means beautiful. Beautiful. Lovely means beautiful, बहुत प्यारा. Second word is buzzing. See the spelling of buzzing. buzzing. Buzzing means humming sound. I have already told you all that buzzing means humming sound of bees. मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को we call humming sound. Okay, buzzing means humming sound. And third word is sleeping head. Sleeping head, the word is used for the sleepy person, those who like to sleep more and more in the morning, that we call the sleepy head. जो लोग सुबह बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं उसके लिए हम sleepy head यूज़ करते हैं. And the word is, last word is tiniest. Tiniest means smallest. Tiniest is the third degree of the adjective tiniest. Third degree of tiny. Tiny means छोटा, फिर tinier means उससे छोटा, and tiniest सबसे छोटा. So the word tiniest means smallest. So I hope you all have understand the lesson. So you all once again read the poem thoroughly. Thank you.